Welcome back. You're watching Mirror Now. Now, Uttar Pradesh is voting today for its 7th phase. Remember, this is the final phase of elections in the state, and voting, which began at around 7 a.m. this morning, will continue to 6 p.m. and 54 seats spanning 9 districts are in the poll fray in this phase. The focal point in today's polling is no doubt Prime Minister Modi's parliamentary constituency Varanasi along with Azamgarh. High inflation, unemployment and the stray cattle menace remain the key issues for the voters in this phase. Let me go across to our correspondents who are joining us from different cities of Uttar Pradesh. First of all, Nilashish is also joining us from Ghazipur. Nilashish, if we talk about Uttar Pradesh and its politics and specifically elections, we always see that caste factor plays a very, very crucial role, and it becomes even more important in this phase because elections are being held in the Ganga belt of the state. But as you have spoken to so many voters, you have covered the issues on ground. Have you seen any kind of change in the attitude of voters? Are they now, this time around, prioritizing issues like development? Well, absolutely. What we have heard from voters is a desire for development, is a desire for employment. And one thing that is very important in this particular constituency that we are in, Mohammadabad, is that the BJP has repeatedly spoken about Gunda Raj and hinted towards the Ansari family. Now, Mukhtar Ansari, who used to contest from Mau Sadar, which is approximately 50 kilometers from where we are, is not contesting this time. His son is contesting. And here in terms of Ghazipur in Mohammadabad, we have Alka Rai ji, who is contesting the election against Shoaib Ansari, who is the nephew of Mukhtar Ansari. If we can just have a quick word with her with regard to this particular contest. Ma'am, आप यहाँ मोहम्मदाबाद में कंटेस्ट कर रही हैं शोएब अंसारी के खिलाफ. बीजेपी ने बार बार ये कहा है कि गुंडा राज बीजेपी ही खत्म करेंगी और कई इशारे दिए हैं अंसारी परिवार की तरफ. यहाँ की लड़ाई अलग तरह की लड़ाई है ना. इस पे बार बार हमसे आप क्या पूछ रहे हैं. हम तो बता ही रहे हैं आपसे. यहाँ की लड़ाई अलग तरह की है. कोई पार्टी नहीं लड़ती है. यहाँ पे एक अपराधी के खिलाफ मैं अलका राय लड़ती हूँ. इसका हमेशा विरोध करती हूँ. लड़ रही हूँ और लड़ती. आने वाला समय में भी देखा जाएगा कि क्या. तो ये लड़ाई जो है ये किन मुद्दों पे है? ये विकास पे है, बेरोजगारी पे है, या गुंडा राज पे है और अपराध पे है? गुंडा राज और अपराध पर है लड़ाई. हमारे पति की हत्या करने वाला अपराधी एक साथ 7 लोगों की हत्या किया था. तो इस गुंडा माफियाओं के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ. विकास का क्या है? विकास हमारी सरकार ने काम किया है. मैं भी अपने क्षेत्र में विकास का काम की हूँ. इस 7वें फेज को कैसे देखती है? जो 54 सीट है, बीजेपी भरी मात्रा में लाएगी सीट दोबारा से? जी. हमसे बात करने का शुक्रिया. That was Alka Rai saying that the issues in this particular area are different. They are of Mafia Raj, of Gunda Raj, of crime and fighting against crime. She has leveled strong allegations, as you heard, but the point being that the electorate has a clear vision in terms of how they will vote, whether it will be that of crime, whether it will be that of law and order, or are they talking about development, jobs, and mehengai, as they say, in terms of increased prices, is something that we'll have to wait and watch, and the results will be out for everyone to see on the 10th of March. Absolutely, Nilashish. In fact, I'm also joined by my colleagues Mayank, who's joining me live from Mirzapur, and Sabyasachi joins me from Varanasi. Sabyasachi, I'll come to you first. This is the Prime Minister's constituency that we are talking about, and the focus, of course, is on jobs, and also, like Nilashish was also mentioning from Ghazipur, the focus has to be on unemployment, jobs, of course, and education and health, because remember, we are coming out of a pandemic. So has that road show that was, undertaken by Prime Minister Narendra Modi, the 3-hour-long convoy that he had on that day, has that helped sway some votes in BJP's favor? What is it really that the people of Varanasi are voting for this time around?
See, when we talk about Varanasi, half of the population over here, they give importance to national issues because it is Prime Minister Narendra Modi's own constituency, whereas the other half believes that the local issues are important. And Prime Minister Narendra Modi carried out a massive roadshow in Varanasi few days back, specifically in the South Varanasi constituency, which is also very important because this is the constituency where the Kashi Vishwanath corridor is, where Kal Bhairav temple is, and most of the temple is in Varanasi South constituency. And this time around, the battle in Varanasi is very stiff between the BJP and the Samajwadi Party. But BJP has been, Varanasi has been the stronghold of the Bharatiya Janata Party because from 1989, BJP has been continuously winning in. But in 2017 onwards, they have given the ticket to Dr. Neelkant Tiwari, who is the minister as well. But there is an incumbency factor which comes in because the local people feels that the sitting MLA has not connected to the people, and that is where Prime Minister Narendra Modi and the Modi factor comes into play in Varanasi, where he has campaigned several times. Specifically, he has made developed the Kashi Vishwanath corridor, the railway stations, the Ghat. So these are some of the factors which gives a big boost to Bharatiya Janata Party, but we can't rule out Samajwadi Party as well because from the south they have given a ticket to Kishan Dixit, who is a Mahant from Mahamrityunjay temple, and he's a young person. He has good connection with the youth, and he's a Brahmin also. So both the candidates from the Varanasi South constituency are Brahmin, and that is where the Brahmin vote will split. So as of now, the battle is very intensified. We'll speak to some of the voters out here. Sir, आपने वोट डाल दिया अपना? अभी नहीं। सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि वाराणसी में क्या-क्या मुद्दे हैं लोगों के? मेन मुद्दा विकास का ही है और क्या है, डेवलपमेंट का है और बस यही है। सर, ये बताइए कि वाराणसी के लोग जब मतदान करते हैं तो आप लोकल इश्यूज मद्देनजर रखते हैं या नेशनल इश्यूज पे मद्देनजर रखते हैं? नेशनल और लोकल दोनों देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल लोकल ही देख रहे हैं, केवल अपना ही देख रहे हैं। लोकल भी, नेशनल भी सब देखना पड़ता है। So we'll speak to some of the more voters. सर, आपने मतदान कर लिया? नहीं। सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि काशी में क्या-क्या मुद्दे हैं आम जनता के? हम सब कुछ व्यवस्था यहाँ ठीक है, अच्छी चल रही है, किसी तरह की कोई रोड्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, कोई किसी तरह की दिक्कतें नहीं है। और नेशनल इश्यूज हैं तो इसमें तो मोदी बेस्ट है, मोदी के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप किया गया है, रेलवे स्टेशन डेवलप किए गए हैं, घाट किए गए हैं, आपको लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? टूरिज्म बढ़ा है पूरा, उससे बहुत ज्यादा फर्क आया है। पूरा टूरिज्म है, टूरिस्ट आ रहे हैं, उससे आमदनी बढ़ी है, सबके साथ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। So there you heard people have different issues, though they are appreciating the development that has taken place. We'll speak to some of the women voters. आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बार के चुनाव में क्या-क्या मुद्दे हैं? बहुत सारे हैं, जैसे पढ़ाई के लिए है, करप्शन को लेकर है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। और महिलाओं की सुरक्षा क्या आपको लगता है पहले से बेहतर हुई है वाराणसी? वो तो पहले से बेहतर ही है। कॉलेज के पास पुलिस वगैरह रहती है तो सेफ रहता है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है, जो भी इसके पहली सरकार थी, बहुत महिलाओं को सुरक्षा मिली, सब चीज़ मिला, बहुत खुश हैं हम उनसे और आगे भी सोचेंगे कि वैसा ही हो। So there you heard the pulse from ground, where people are appreciating the work that's being done on ground, specifically the development that has taken place in Kashi, along with the focus on the women security as well, because in Kashi, in every single chowk, there has been CCTV cameras installed, the police is on alert, so people definitely feel the change, but there are obviously some local issues which has not been addressed properly till now, which people feel that more work needs to be done. Back to you. Right, Sabyasachi, thank you so much for getting us all those voices from Varanasi. Let's in fact go to Mirzapur now. Mayank is joining us live with more updates. So Mayank, we just heard voices from Varanasi, and Mirzapur is very, very close to Varanasi, which happens to be Prime Minister's stronghold, his constituency. But it doesn't mean that BJP is in for a smooth ride here, because it is facing a very, very tough challenge in the form of Samajwadi Party.
Well, you're right. Although the case of Mirzapur cannot be seen in an isolation from what is happening in Varanasi in terms of political situation, but yes, the challenge for the BJP has become very stiff since the emergence of Samajwadi Party as the formidable challenger. Before diving deep into what the challenges lies ahead for the BJP and also for the Samajwadi Party in terms of challenging the incumbent BJP, we'll try to talk to some of the voters who have just come out of the voting station. Sir, आप अभी just voting करके आए हैं, आप बताएं आपके लिए मेन मुद्दे क्या थे यहाँ पे? मेरा नाम कैलाशी श्रीधर गुप्ता मिर्जापुर से मैं बोल रहा हूँ। ये जो हमने वोट किया है सुरक्षा के नाम पर, बेटियों की सुरक्षा के नाम पर, आने वाले दिन में कोई असुरक्षा ना हो और मेडिकल के जो बढ़ रहा है उसके लिए कोई भ्रष्टाचार ना हो, इस कारण मैंने वह वोट दिया है कि ताकि बीच में किसी भी तरह की परेशानी न हो। मैम, आप महिला, आप बताइए, अभी आप वोट देकर के आए, आपके लिए प्रमुख मुद्दा क्या था? मेरा ये मुद्दा है कि मेरे घर के आसपास नालियाँ, कूड़ा करकट सब पड़े रहते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के आसपास, मेरे क्षेत्र में नालियाँ। विकास के मुद्दे पर वोट कर रही हैं आप। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कितना बड़ा है मिर्जापुर में? बड़ा है। महंगाई? हाँ, महंगाई बढ़ा हुआ है। तो वो उन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने? हाँ, मैंने उन मुद्दों को रख के ध्यान में बोला है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू होगा। सो हाउ बिग इज दिस एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन दिस? क्या है कि डे बाय डे जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो उस पर सर कॉम्पिटिशन्स और जो बच्चे जो हम लोग डिजर्विंग कैंडिडेट है सर उसमें हमारा नाम नहीं आ पा रहा है। 0.25 से हम लोग रुक जा रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि सर कि जो वैकेंसीज हो सर उसको बढ़ाया जाए। एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट पॉइंट दैट यू हैव वोटेड ऑन। बिगेस्ट पॉइंट फॉर मी। So what about the development and other issues in local issues in Mirzapur? What are those agendas? एक्चुअली क्या है सर, मेन रोड पे ही फोकस किया जा रहा है। जैसे कॉलोनीज हैं, मोहल्ले हैं, गली है, उन पे बिल्कुल ही फोकस नहीं किया जा रहा है कि मेन रोड पे ही नाम मतलब रोड बनाए जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो गलीज हैं, मोहल्ले हैं, जो छोटे छोटे एरियाज हैं, उनको भी डेवलप किया जाए। ओके, थैंक यू। सर, आप लोग भी अभी वोट करके आए हैं, अभी आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा है? हमारा मुद्दा विकास का है। विकास हो रहा है और हम लोग वोट जो दे रहे हैं योगी और मोदी को देख के दे रहे हैं। विकास के नाम पे? विकास के नाम। आप लोग किन मुद्दों पर वोट करते हैं? विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। पहले से बेहतर हुआ है हालात मिर्जापुर की खराब? पहले से तो बेहतर नहीं, हमें समझ में आ रहा है कुछ। बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, महंगाई कितना? महंगाई तो चरम सीमा पे है। इन मुद्दों पर करके आपने वोट किया इस बार? सर, आप भी अभी वोट देकर के आए हैं, आपने किन मुद्दों को ध्यान पे रखा? हमने विकास और हमारे यूपी के ध्यान में रख के, क्योंकि यूपी के रहने वाले हैं। यूपी जब हमारा दम में रहेगा तो पूरा इंडिया में दम रहेगा, क्योंकि यूपी ही चाहती है कि जो दिल्ली पर राज करता है। तो हमारा जो हमारे यूपी के लोग हैं इस वोट के माध्यम से ये दर्शाएंगे कि यूपी पे वही राज करेगा जो यूपी के दिल में बसता है। लोकल मुद्दों से उठ करके आपने राष्ट्रीय मुद्दों को चुन करके वोट किया? हमने अपने यूपी का मुद्दा चुना है, क्योंकि ये यूपी का चुनाव है, न कि केंद्र का चुनाव है। और महंगाई तो इस तरह पर बढ़ी हुई है कि जो आज के ज़माने में 2000-4000 रुपये महीने में काम करता है, उसके आत्मा से पूछिए वो किसको वोट देगा। ओके, थैंक यू। तो इन्फ्लेशन, महंगाई आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। As you can hear that voters are pointing out the inflation and unemployment as two of their biggest concern in Mirzapur district. Talking about the challenges that the BJP is facing from SP, the SP has calculated very heavily on the caste equation. Remember, last time around BJP swept almost 5 on all the seats that is up for the grabs in the district along with their partner Apna Dal, but this time around challenge will be very stiff. Samajwadi Party tried to build a narrative that the BJP ruled government in the state is against the lower caste. And remember, the voters from the lower caste constitute a very heavy base in these regions on all the 54 seats of Uttar Pradesh, especially in Mirzapur. And that's why BJP has its task cut out to remain formidable in this district. However, what they will be hopeful that their junior partners in alliance such as the Apna Dal and also the Nisad party led by the Sanjay Nisad will be able to do some vote transfer to the BJP to help them get back on its feet. BJP almost swept these part of region by more than 60% in strike rate, but their challenge will be very stiff. Coming back to the Mirzapur city constituency where I'm currently at, it's a stiff contest between Ratnakar Mishra and Kailash Chaurasia of Samajwadi Party district. Remember, Kailash Chaurasia was a 3-term MLA from Samajwadi Party from the same constituency before he was dethroned by the incumbent Ratnakar Mishra in 2017 in what political experts call a wave election. That wave is missing in this round of election, and that's why it will be very challenging for Ratnakar Mishra to hold on to his advantage. But the fact remains on the ground is there was margin of more than 50,000 for his victory, and that is a lot of vote.
in terms of winning margin in an assembly seat, and that's why Samajwadi Party will have to up its game by maximum numbers to dethrone the BJP from the Mirzapur district and also at the Mirzapur city constituency. Back to you. Absolutely. Mayank, thank you so much for joining me there from Mirzapur. Remember, a constituency not very far from Varanasi, which is the Prime Minister Modi's constituency. We have to wait and watch how really are these two districts really choosing to vote this time around.